ऑफिस ऑफ द पुरी म्यूनिसिपालिटी पुरी आप देखिपे 15/12/25 रही टू द हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस गंगाधर विद्यापीठ पुरी देखिपारे यही सब्जेक्ट रही टू डेजिग्नेट ए नोडल ऑफिसर फॉर द मैटर रिलेटिंग टू स्ट्रे डॉग सर मैडम with reference to the subject cited above I am to intimate that for compliance up to the Honorable Supreme Court's order dated 7/11/25 you are required to designate a nodal officer who will be responsible for the upkeep and cleanliness of the premises and for ensuring that stray dogs do not enter or inhabit the campus ତେଣୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରକୁ ଭୋଲା କୁକୁର ପଶୁ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଲିନଲିନେସ୍ ଅଛି ବୋଲି ensure କରାଇବେ The details of the said nodal officer shall be displayed prominently at the entrance and notified to the Puri municipality. The nodal officer shall intimate if any such issues to the executive officer Puri municipality from time to time for necessary action. जनको टीचर को नोडल ऑफिसर डिक्लेयर करा तांका नाम मध्य डिस्प्ले हम से जदि कौन प्रॉब्लम फेस करेंगे म्यूनिसिपालिटी सहित कंटाक्ट करेंगे यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ द नोडल ऑफिसर so designated to the executive officer Puri municipality in the following format within 3 days कौन देवे name of the school name of the nodal officer designation of the nodal officer एवं मोबाइल नंबर तो निश्चित ये गोटे बड़ खबर होची एबे जहाँ बाकी थिला शिक्षक मानकू कुकुर जगिबा दायित्व मध्य देलेनी सरकार देखिबा परवर्ती अपडेट प्राथमिक शिक्षक संघ तरफ बीजेपी सभापति मनमोहन सामल को भेटी 2 दफा दाबी बाबद में पुंखानुपुंख आलोचना होती आप देखिपे भद्रक एमएल सीताकांत महापात्र मध्य से भागीदारी रही तो निश्चित भाव एपटे केउझर रे मध्य गोटे ग्रुप संघ तरफ मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को भेटी एवं एथिरी मध्य जहाँ सूचना रही आश्वासन रही खूब शीघ्र प्राथमिक शिक्षक दाबी पूरण हो बोली मुख्यमंत्री कहते 2टी प्रसंग 28 ग्रेड पे 2001 रु 6+6 नेशनल इंक्रीमेंट 2टी दाबी विषय रे पॉजिटिव रेस्पॉन्स आसी देखिबा परवर्ती अपडेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फाइनेंस डिपार्टमेंट तरफ ऑफिस मेमोरेंडम रही 35,884 30/12/25 रिलीज होगा जाऊँगी डीएनएस अलाउंस 5% हाइक होती एक्जिस्टिंग रेट रे 252% रु 257% को वृद्धि पाई जोटा कि 1/7/25 पाखर पिछला भाव लागू हो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मानक पे प्री रिवाइज हो सारी जोटा 6th पे अनुसार जो मैंने पाँच से गुड न्यूज रही तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कनसीडर कर सारी वर्तमान ओवरऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेस को नजर रखी ओडिशा फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005 स्टेट गवर्नमेंट प्लीज हो जाती डीए को 5% वृद्धि करने एक्जिस्टिंग रेट 252% रु 257% को वृद्धि पाइब ग्रेड पे बेसिक पे सहित मिसिकी 1/7/25 रु ताहाको पाइबे एवं यह पिछला भाव पाइबे एरियर एवं आगामी देखिपे एडिशनल डोज ऑफ डीए 5% एनहांसिंग फ्रॉम एक्जिस्टिंग रेट 252-257 1/7/25 रु पाइबे आडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो मैंने 6th पे अनुसार दरमा पाँच BA bill for drawal of this enhanced DA will be submitted to all treasuries, special treasury along with pay bill for drawal from January 2026 से माने यही दरमा को January 2026 रु पाइबे एवं एरियर भावे 6 मास 5% DA मध्य पाई परिबे जनवरी मासर दरमा पर तो निश्चित ये गोटे बड़ खबर आसी पहुँची शेष समय रे बहुत घोषणा देखा परवर्ती अपडेट।
हरियाणा हाइकोर्ट आसी गोटे निर्देश जो प्राथमिक शिक्षक मानकर पुणी गोटे मामला को छंदी जाइए CWP दलबीर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स देखिपे प्रेजेंट मिस्टर KS Banyana advocate for the petitioner, Mr. Vikrant Pambu, additional AG Haryana. Prayer in this writ petition filed under Article 226 of the Constitution of India is for issuance of a writ in the nature of certiorari for quashing the impugned final joint secretary list, joint seniority list, elementary school headmaster, cadre and trained graduate teacher cadre dated 21/11/25. As the said seniority list has been issued in violation of Rule 11(1) of Haryana School Education Group C State Cadre Service Rule 2012 सर्विस रूल अनुसार रूल 11 सेक्शन सबसेक्शन 1 भायोलेसन होती आनेक्सर करा जायतला in spite of the fact that ESHM elementary school headmaster and TGT are two different cadres as well as in violation of principle of natural justice without having any objection and without issuing any tentative seniority list, further prayer has been made to quash the impugned letter dated 24/11/25. दुईटी सेपरेट कैडर सत्वे जिते मिसा जाइए ऑब्जेक्शन दि जाए ना और 24/11/25 अनुसार चिठी को क्वाश करने प्रेयर थिला. फर्दर रिट्स ऑफ मैंडामस हैज बीन sought directing the official respondent to consider the cases of petitioner, that is ESHM, for promotion to the post of headmaster along with all consequential benefit prior to TGT, as the ESHM is the promotional post of TGT and the post of ESHM is having higher pay scale than TGT, and further TGT are not having the required eligibility condition for promotion in view of Rule 7 column 4 of Appendix B of Haryana State Education School Cadre Service Rule 2012. सबुठार बड़ कथा रही से कहते TGT रो प्रमोशनल पोस्ट हूँ ESHM, तेणु यह कार्यकारी करने को हेले TGT माने ESHM ठारू जूनियर रहिबे. Lastly, it is prayed that during the pendency of the writ petition, the promotion of TGT on the post of headmaster may be stayed. जेतु प्रमोशन आगौची तेणु ये केस फैसला न होगा पर्यंत स्टे पाई प्रेयर थिला. Landed counsel for the petitioner inter alia contended that in terms of Rule 11(1) of Haryana School Education State Cadre Service Rule 2012, the interest seniority of the members of service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service provided that where देखो ये आउरी कथा कहते पिटिशनर जे रही काउंसिल कही हरियाणा स्कूल एजुकेशन स्टेट कैडर सर्विस रूल 2012 इंटरेस्ट सीनियरिटी determinable length of continuous service on any post in the service provided that where there are the seniority shall be determined separately for each cadre. तांकर continuous service को नहीं seniority काउंट हेबो किंतु यदि different cadre service था seniority determined हेबो separate cadre पई अलग अलग. Landed counsel for the petitioner further submit that although Rule 9 of Haryana School Education State Cadre Service clearly indicates that elementary school headmaster is a promotional post of trained graduate teacher. Trained graduate teacher promotional post होची elementary school headmaster. The respondent have failed to issue separate tentative seniority list for the two distinct cadre. Rather, a joint final seniority list has been circulated without even inviting objection from the affected person. तेणु एमानक पई दुईटी सेपरेट कैडर लिस्ट तैयारी हबार आवश्यकता रही, सीनियरिटी लिस्ट तैयारी हबार आवश्यकता रही. लैंड स्टेट काउंसिल अपीयरिंग ऑन एडवांस नोटिस 6 शॉर्ट अकोमोडेशन टू हैव कंप्लीट इंस्ट्रक्शन इन द मैटर एंड फाइल रिप्लाई. तेणु 22/12 को रखा जाइतला.
In the meantime, the recommendation of the departmental promotional committee shall be kept in abeyance. ତେଣୁ ଷ୍ଟେ କରି ଯାଇଥିଲା. Reply if any be filed registry of the court at least 1 week before the next date hearing with an advance copy to counsel opposite. ତ ଇଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି. ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1 କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2ର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1ରୁ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2କୁ ଜମ୍ପ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଇଲିଗାଲ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଟେ. ସେମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି କ୍ୟାଡ଼ର ରହିଛି, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1 ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଡ଼ର, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2 ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଡ଼ର. ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କମ୍ବାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି. ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦା ହୋଇ ରହିବ. ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍.